Hey everyone, welcome back. It's Jojo back here after my little chai break. If you saw the previous video, you know, previous video of this session. It may not have been yesterday's video. I don't know how I'll upload these. Anyway, I'm sitting in one session for lunch break, and now after Dikkat and Kya Chal Raha Hai, I am gonna cover Fanne Khan, Youngie, and First Place. 2 tracks with Youngie. Fanne Khan with Youngie and then First Place. So let's just get right into it. This one, like I said, features Youngie, producer Nitin Randhawa, okay, composer also Nitin, lyricist Abhijay and Yash Chandra. Oh, Youngie, okay, Yash. Oh, his name is Yash. I did not know this. Okay, and the composer also, it says Siddhant Sharma. Okay, so Nitin and Siddhant, Abhijay and Yash. Let's just get into it. Fanne Khan. 1, 2, 3, play. Seedhe Maut, yeah. The trick. Or watching a master. जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी बंदे करते हेट उन्हें करना है आराम सबर का नहीं है खारे तो चबारे हरे आम मेरे दुख और पीड़ा जो भी है वो सारे हरे राम ये लेके मेरा नाम ले रहे हैं गांड में उड़ता बाण मेरी बंदी की शक्ल में दिखता मुझको उड़ता चांद तेरी बंदी बनना चारी मेरा सूरज सरेआम बेइज्जती करारे रैपर अपनी भरे काम ये बाहर से लाइनें कॉपी करके समझे फन्ने खान तेरे शो से सस्ता है बेटा तेरी कला का दाम कुछ भी हो बस खुद से झूठ मत बोल वो है हराम ये करते साले स्लैक और फिर बोले I'm the one तू नहीं है वन बेटा तू है मेरा चेक ये मैराथन में कंसिस्टेंट हम फुर्ती से गुम अपनी वेव में आइडियल ये तेरे मूर्ति से बनता खुद से बेहतर जब भी कम या मुझको घूरती है पीने को है बार पूरा बैक स्टेज ये फिर भी आके खून पीते छूती है साला कोई नहीं मुझ जैसा यहाँ पत्ते की बात ज्यादा बढ़ेगी बात तो पूरी ताकत से आती सीधे मौत लगेगी आग जलेंगे मरेंगे सारे सांप पर मिले पे निकली पाती आवाज मुन्ना मुझसे लगा कर करा करना मोल भाव कला पर बैठ बैठे वापस अपनी जगह पर कागज कोरा छोड़ूं सजा कर गया घर नहीं वापस कब से क्यों किया लेना मुझको नया घर था ABJ का वो गाना वो बोला जमा कर तो रखा जमा कर पैर कभी छोड़नी फुटिंग गानों में सॉस है I've been cooking शुरू से सीन में I've been pushing destined to it बेचारों के YouTube पे आते views बहुत परे होती नई बुकिंग क्यों I've been already the best इन्हें पता नहीं था Mean already a million ये तो होना ही था सपने के पीछे भाग रहा था मुझे सोना नहीं था कितनी भी दिक्कतें आई ये सीना चौड़ा ही था गाने बनाना ये रेमेडी साइज सीधे मौत फुल पावर है फैमिली टाइज बातें ये कहने की ना है जूते से सहमति ना है पहले भी कहा है सीन पे चले कमांड तेरे प्रोजेक्ट से महंगा मेरे एक वर्ष का है दाम फन खान जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी बस देखे सबासीन इनकी हरकतें सस बातें जो दो come at me I'll teach you how to bust a rhyme and keep it 100 grand on a watch देखा माँ को करते काम तो I'm not giving up सिको बहुत जानते थे कि होंगे पॉप रखो म्यूजियम में कलम सीधे मौत से वर्क ऑफ आर्ट हर गाना करता मैं रिकॉर्ड और उसके बाद में लूट डकार कोई रैपर डेड है हाथ में मार्टी नहीं अब बैठे at the top I love the view और बोलूं कितने बार किया I don't fuck with you है क्यों confused I choose to kill this shit और जीतू हर दिन हूँ मैं W चुम्बक दोस्त भी कम नहीं आता है कॉल जब ऊपर से कोई लाता है सुपर फूके भाई सब आंखें लाल है भेड़ी टूटा नेस्ती छोरों को करूँ मैं कैरी बहुत आगे तक है इन कंधों पे बहुत जान इनके दो गाने नहीं चले तो बोलेंगे fuck it और करो कुछ और काम कोशिश करो बोला कोच अगर मारोगे 100 तभी बोलोगा एक बार यूज नहीं करी पूरी ताकत अभी लेकिन यहाँ नहीं टेका तेरा फन्ने खान सालों पहले दिए झंडे कार्ड बुआरी किसी की चले कांड आंडू पांडू के लिए डेमेंट और आजू बाजू काफी करे कांड इन बड़ों से ज्यादा हूँ जिम्मेदार अभी से तेरे भाई दोनों है जमींदार मैं तो बस लिख रहा था कविता मुझे क्या पता था कटेगा ले लेगा फन्ने का तेरा भाई सीधे मौत जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिल्ली चांद की छांच तोड़े दिल तोड़े कान मुझे जान मेरी Jeez, थोड़ा और लूप कर लेते वो वाला मेलोडी I can't what
Oh, it was actually exhausting listening to it. It gave me, I know which songs exactly I have felt like, मैं थक गई, while listening to them. This is one of those songs. I'm genuinely feeling tired. I genuinely feel like I only worked out. Um, I don't know the beat was its own person in the song. The beat was its own person. Like it just, Nitin, right? Nitin Randhawa. कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? What was this? What was the music on this? It's one of the most unique sounding pieces of music I have heard. It actually had, oh, it even if you really think about it, it had very retro filmy vibes also. And I just said this in the last video that whenever there is a real instrument on a track in the music, in the arrangement, it elevates it 5 notches for me. In this track particularly, it elevated things 10 notches. It is just one of the best beats I've heard on this mixtape. Friggin' hell, so good, so good. The music, and then I'm tired of repeating myself. I'm tired. These guys and their flows. And there's something to be said about Encore whenever he's on the hook of a track. Whenever. I mean, how does he do it? How does he do it? I mean, not that Calm isn't, but like, I'm just saying because isme bhi or last one mein bhi or um usme bhi what was it? Ola Amigo mein bhi. And then of course also several on this mixtape. Every time he's on a hook, he brings a different vibe in his vocal delivery. Different like attitude. It could be completely intense and full of like energy, but more often than not, it is laid back and it's just one of those I don't give a F attitude coming across in his voice in multiple different ways and styles. How does he do it? How does he reinvent his delivery for every hook that he's on? It just blows my mind. So good, so good. And now let's talk about the verses. I felt like Encore ne start kiya tha na? And then Youngie came in and then Calm ended it. First of all, okay, let me collect my thoughts. So I will go over the lyrics, of course, but I feel like Encore just like with the hook and with his first of all the Jaan that kept happening was कहाँ से लाते हैं इतने vibey hooks? कहाँ से? How do you write these lines? Okay, and then he set the scene so well. This is my feeling as the track progressed. He set the scene so well with his verse. I feel like Youngie's verse was probably the longest of the lot, and I feel like Youngie decided कि ये collab hai Seedhe Maut ke mixtape mein. I'm gonna just bring my A game and do all the different things that I'm capable of doing. I'm gonna pack it all into one verse. So he like switched his not just his flows but also his like vibe and subject matter so much within the verse. It was just blowing my mind. So yeah, so I feel like Encore just killed it. Then he set the stage for Youngie. Youngie came in and performed and how. And then Calm came and just smashed it out of the park with his usual coolness. Like, oh, but even that usual coolness, the end bit, just as his verse ended, was just. So I'm looking at the lyrics here, and I mean maybe it's just the way it's written, but yeah, it is. Youngie's verse is pretty much double both their verses in terms of length here on paper. I don't know in terms of time if it is or not, but I can't get over Calm's flows. I just can't. It's a case study, man. It's a serious case study how he does this, especially the end of his verse, the last 4 lines or something. 4 or 8, yeah, 4 lines I think. When I go through the lyrics and just your senses are so like it just shakes your senses. You're like किस चीज पे focus करूं अभी ये हो रहा है अभी वो हो रहा है अभी वो हुआ था अभी ये okay, let's just go over the lyrics. चलो जान मेरी जान दिल्ली 96 की जान, what is that? तोड़े दिल तोड़े मुझे जान मेरी जान सुन ओए जान मेरी जान दिल्ली something something तोड़े दिल मुझे जान मेरी जान. It's just it's simple. There's nothing complex in these lines, but it's just the vibe and the flow and the delivery. Oh, so freaking good. Okay, verse 1. बंदे करते हेट उन्हें करना है आराम सबर का नहीं खा रहे सब चबा रहे हरे आम है मेरी दुख और पीड़ा है वो सारे हरे राम ये लेके मेरा नाम ले रहे हैं ले रहे हैं मैं उड़ता बाण हिलारस मेरी बंदी की शक्ल में दिखता है उड़ता चांद उड़ता या उगता चांद यहाँ पे उड़ता लिखा है तेरी बंदी बनी
बननी चाह रहे मेरा सूरत सरे आम। अच्छा, बेइज्जती करा रहे हैं अपने रैपर भरे काम, जे बाहर से लाइन कॉपी करे समझे फन्ने खां। तेरे शो से सस्ता बेटा तेरी कला का दाम। ओहो, कुछ भी हो मुझसे झूठ मत बोल, वो है हराम। ये करते सारे स्लैक और बोले आई एम द वन। तू नहीं है वन बेटा, तू है मेरा। ओ, then okay, one second, can we talk about Youngi's entry here? What, it was so smooth and so, like, before you knew it he was there. Anyway, very nice. Youngi, check ये marathon में consistent, actually the same thing happened in Calm, Kevin. Oh, check ये marathon में consistent हम फुर्ती से, ये marathon में consistent हम फुर्ती से, okay, ये marathon में consistent हम फुर्ती से, गुम अपनी वेव में आइडल ये तेरे मूर्ति से, गुम अपनी वेव में आइडल ये तेरे मूर्ति से, बनता खुद से बेहतर जब भी कमियां मुझको घूरती हैं। अच्छा, नाइस नाइस। पीने को है बार पूरा बैक स्टेज, ये फिर भी आके खून पीते। हाँ, यह साला कोई नहीं मुझ जैसा यहाँ, पते की बात ज्यादा बढ़ेगी बात तो पूरी ताकत से आती है सीधे मौत। लगेगी आग जलेंगे मरेंगे सारे ये सांप, पर मिलने पे निकल नहीं पाती आवाज। ओ, why is everyone talking about snakes? How many snakes are there in the industry? Can we can we name and shame? You should just like tell us now who is being a snake. I'm very curious. सबके आसपास सांप ही सांप हैं, तो फिर रियल दोस्त लोग कौन है? I'm wondering. पर मिलने पे निकल नहीं पाती आवाज, मुंह ना मुझसे लगा कर करा करना मोल भाव कला पर। नाइस। बैठ बेटे वापस अपनी जगह पर, कागज कोरा छोड़ू सजा। ओहो, कागज कोरा छोड़ू सजा कर, गया घर नहीं वापस कब से, क्योंकि है लेना मुझको नया घर। ओहो, वेरी नाइस थॉट। वेट वेट, था एबीजे का वो गाना, वो बोला जमा कर, जमा कर, तो रखा जमा कर, पैर कभी छोड़ी नहीं फुटिंग, गानों में सॉस है आप इन कुकिंग। आई लाइक दैट लाइन, गानों में सॉस है आप इन कुकिंग, कोट अनकोट। शुरू से सीन में आप बिन पुशिंग, डेस्टिन टू विन, बेचारों के यूट्यूब पे आते व्यूज यूज बहुत, पर है होती नहीं बुकिंग। क्यों? आई बिन ऑलरेडी द बेस्ट, इन्हें पता नहीं था, मीन ऑलरेडी अ मिलियन, ये तो होना ही था। सपने के पीछे भाग रहा था, मुझे सोना ही था, जितनी भी दिक्कतें आई ये सीना चौड़ा ही था। आई लव दिस सेक्शन। गाने बनाना ये रेमेडी सा है, सीधे मौत एक्स फुल पावर है, फैमिली टाइज बातें ये कहने की ना है, से सहमति ना पहले भी कहा है, सीन पे चले कमांड, तेरे प्रोजेक्ट से महंगा मेरे एक वर्स का है नाम, फन्ने खां चल जाने जा। देन द वे काम एंटर्ड विद बस। ओह, आई वाज लाइक ओह, क्या हुआ? बस दिखे सब, I think it can compete with Amitabh Bachchan's बस कह दिया। Very powerful. बस दिखे सब, I see it, इनकी हरकतें हैं सस, बातें छोड़ो, come at me, I'll teach you how to bust a rhyme and keep it 100 gang on a watch। देखा, this line was very sweet। देखा माँ को करते काम तो I'm not giving up। सिख हूँ बहुत, जानते थे कि होंगे पॉप, रखो म्यूजियम में कलम, सीधे मौत a work of art। ओहो, yes, you're not wrong, I agree। रखो म्यूजियम में कलम, सीधे मौत a work of art। हर गाना करता मैं रिकॉर्ड और उसके बाद मैं लूं डकार, कोई रैपर डेड है हाथ में मार्टीनी, हम बैठे एट द टॉप। आई लव द व्यू, और बोलूं कितनी बार कि यार व्यू है क्यों कंफ्यूज्ड, आई चूज टू किल दिस शिट और जीतू हर दिन। हूँ मैं डब्ल्यू चुंबक, दोस्त भी कम नहीं, आता है कॉल जब ऊपर से कोई लाता है सुपर। फूके भाई सब आंखें लाल है, भेड़ भेदी टूटन, व्हाट व्हाट इज दिस, नेस्टी छोरों को करूं मैं कैरी बहुत आगे तक, हैगी इन कंधों में बहुत जान, इनके दो गाने नहीं चले तो बोलेंगे केटो करे कुछ और काम। कोशिश करो, बोला कोच, अगर मारोगे 100 तभी गोल होगा एक बार। आई लाइक इट। मोटिवेशन यूज नहीं करी पूरी ताकत अभी, लेकिन यहाँ नहीं टिका तेरा फन्ने खां। सालों पहले दिए झंडे झंडे गाड़, बू आरी किसकी जली, आंडू पांडू के लिए डिमेंटर, आजू बाजू काफी करे कांड, इन बंधों से ज्यादा हूँ जिम्मेदार, ये इन बंधों से ज्यादा हूँ जिम्मेदार, अभी से तेरा भाई दोनों है जिम्मेदार, मैं तो बस लिख रहा था कविता, मुझे क्या पता था कट्टे का ले लेगा पेन आकार। ओहो, दिस लाइन, तेरा भाई सीधे मौत, जान मेरी जान। What an end. Oh, he smashed it there. I think this is for me the best beat so far on the mixtape. I just can't get over what has happened in the music.
and the whole track is showing as the most replayed. I've made it a habit to check that now. It starts around 029 and then at 2:34 again. So clearly is being loved. Beautiful, beautiful. One of the best. Well, how many features have I covered? I've covered Swa. I've covered well, Takat, if it can be called a feature. I've covered Khatta Flow, of course. And now I've covered this and Peace of Mind. I feel this is one of the best features. This and Khatta Flow and Suave right now for me. This one just for the music. For the music, I think best. So okay, this is done. Let's go to first place. Damn, I have 2 tracks to cover in each video. Hold up. We must proceed. Okay, first place. Who okay, this doesn't feature anyone else, right? Okay. Here, producer Kam. Listen, this man has been working overtime. Can we just give him his flowers already? Double bouquet. 1, 2, 3, play. Maybe we ought to load the gun now to be sure, huh? बंदे हैं फर्स्ट प्लेस तो लौंडे भारी हैं 10 पे बड़ों को बोलो नमस्ते हम सबसे बड़े ये बच्चे आई मीन अ वर्स्ट केस नंबर नहीं आएंगे भर के नंबर नहीं आएंगे ना आए सीधे मौत कल्ट है नीड नो एलाई गो थ्रू शिट जिंदगी का तुझे पता है तेरा दोस्त आज तेरा सगा है वो कल तुझे डस सकता है समझा बचाने ये खींच के डुबाएंगे पीछे क्यों आऊं अगर कूदोगे खाए में दिल्ली में रहता पर ऑफिस मुंबई में टाइम पे तो पैसा वक्त जो देनी भाई से दे रहा सरप्राइज में ये ना दिखाई दे मैं मारूंगा चाय में वो फर्स्ट प्लेस पर बहुत टाइम से इस गेम के अली और टाइसन लुक एट माय नेक तो सोना लू प्रॉपर्टी करूं इन्वेस्ट फूकू ये छोटा टू कोप द मैं जाके गली के बच्चों से पूछूं द बेस्ट तेरा बंदे हैं फर्स्ट प्लेस दो लौंडे भारी हैं 10 पे बड़ों को बोलो नमस्ते हम सबसे बड़े ये बच्चे आई मीन अ वर्स्ट केस नंबर नहीं आएंगे भर के High power, skyscraper, तेरी bitch taker. I don't got no time for your bullshit. ये थारी में छेद कर रहे ये हैं. साले सारे गद्दार है मैं दोस्ती ने बहने में आके तो बंदे हैं फायदा उठा रहे मैं जिन बंदों से आता उसे बचा रहा वो उन्हीं बंदों को लाम मुझे पिटवाने हो नो मैं आजकल रहता हूँ बिजी कर खाली हूँ तो भेजा देता है बीटी मैं करम पे चलता तू रख अपने रीति रिवाज या कोई जाने ना क्या मुझ पे बंदे हैं फर्स्ट प्लेस दो लौंडे भारी हैं 10 पे बड़ों को बोलो नमस्ते हम सबसे बड़े ये बच्चे आई मीन अ वर्स्ट केस नंबर नहीं आएंगे भर के वापस 60s में चले गए. Very listen, just props to Calm for the production. I can't this is क्या हुआ? It just sounded like a movie when it started. It ended like a movie, and in the middle, what happened? I can't say it enough. I just love real instruments on a track. It just gives a whole other like vibe. Let me see where this Gaane ke lyrics hain. But you know the thing is, this is again a very short song. Kya vibes? It's not like they're saying different things on tracks. It's just the way they're saying them and phrasing them, and the way they're writing each beat and flowing on each beat is just, you don't feel like there's any like repetition kind of thing happening. No, it's not. Every track is like unique on its own. There were some lyrics here that I want to quickly just talk about. Okay, that intro, you know, the music started. I was like, this is gonna be a nice chill track, and then no, suddenly out of nowhere, somebody says, maybe we got little of the gun now. To be sure, huh? And then something happened there, and I was like, what? Why are we turning violent suddenly? Where did the gun come from? Itna acha peaceful setting mein. Anyway, encore. Bande hai first place. Do londe bhari hai 10 pe. Bardon ko bolo namaste. I like this whole hook. Again, it needs to be said. Encore on a hook is just another vibe. It's a whole other vibe. Every time, it's a different vibe, and it's a different level of coolness. बड़ों को बोलो नमस्ते हम सब से बड़े ये बच्चे नमस्ते अंकल वो एडलिब नमस्ते अंकल आए तो मुझे नमस्ते आंटी की याद आ गई तो वी हैव बोथ नाउ आई मीन हैवर्स केस नंबर नहीं आएंगे भर के ओके वर्स वन ऑनकोर वेरी क्विक शॉर्ट सॉन्ग वर्स नंबर नहीं आएंगे ना आए सीधे मौत कल्ट है नीडो एलाई आई गो थ्रू शिट जिंदगी का तुझे पता है
तेरा I go through तेरा दोस्त आज तेरा सगा है वो कल तुझे डस सकता है समझा oh oh there's an ad lib here with a name in it oh okay I got it अच्छा ठीक है ये तो होना ही था कहीं ना कहीं तो निकालना ही था है ना okay verse 2 काम हाथ दो बचाने but you know that whole episode since we're here I don't know should I comment on it should I comment on it oh no there's no point it's okay um all I'll say is very difficult to spot the real ones in your life that's all I think we all know that I'm not saying anything amazing हाथ दो बचाने ये खींच के दबाएंगे पीछे क्यों आऊं अगर कूदोगे खाई में actually you know what I'll say about that and because there's so much shit going on in the world right now. And I've been following things very closely on Twitter and everywhere else. There was someone who phrased a very nice tweet. Someone I admire, and they said, "Don't let your um, values be determined by your politics." And I'll say that kind of applies to everything in life. Don't let your values be determined by a song or an artist you like or a friend of yours, whatever. If something is against your values, then be true to your values instead of individuals or ideologies or whatever, right? Anyway, I don't know why I said that. ठीक है, चलो let's move on. हाथ तो बचाने ये खींच के दबाएंगे पीछे क्यों आऊं अगर कूदोगे खाई में दिल्ली में रहता पर ऑफिस मुंबई में टाइम पे दो पैसा चोदी नहीं भाई से टाइम पे दो पैसा या they don't surprise me ये ना दिखाई दें मैं मारूंगा मारूंगा या मारूंगा मारूंगा जाई जाई में what is जाई ZHAI who first place पर बहुत टाइम से इस गेम के अली और टाइसन look at my neck लूं सोना लूं प्रॉपर्टी करूं इन्वेस्ट फूंकूं ये to cope with the mess what is jota is that a joint फूंकूं ये to cope with the mess जाके गली के बच्चों से पूछो the best तेरा भाई बंदे हैं first okay then verse 3 काम oh just 4 lines high power skyscraper I don't got no time for your bullshit ये थाली में छेद करें then verse 4 encore again ये साले सारे गद्दार हैं मैं दोस्ती निभाने में आगे तो बंदे हैं फायदा उठा रहे मैं जिन बंदों से यहाँ था उसे बचा रहा वो उन्हीं बंदों को लाया मुझे पिटवाने oh did that happen okay मैं आजकल रहता हूँ बिजी अगर खाली हूँ तो भेजा देता है BT oh okay see this is a very common problem so because your thoughts are annoying you and giving you BT quote unquote you keep yourself busy to avoid those thoughts it's not a very healthy practice let me just say you got to address your demons and get rid of them that's all I don't know I'm not trying to be preachy or anything I'm just saying what I think about this line मैं आजकल रहता हूँ बिजी अगर खाली हूँ तो भेजा देता है BT मैं कर्म पे चलता तू रख अपने रीति रिवाज अच्छा यहाँ कोई जाने ना क्या मुझ पे बीती ओके बंदे हैं फर्स्ट में अच्छा yeah clearly a lot on his mind about something particularly this song was aimed at one happening or issue but that being said vibes music very different क्या हो रहा है इस mixtape में everything you know this is when you know a project is amazing when nothing a project of 30 tracks let me say is amazing or some other level of you know creativity is happening in it because nothing is sounding like the other thing and like I said there's not a huge difference in the kind of topics being covered in the lyrics, but it just nothing is sounding similar because of the way they're executing it. So love it. And seriously, double bouquet for Kam for his production and talent and everything. And अभिजय तो मतलब आप तो अब hooks के king हो रहे हैं slowly in my books. I'm just saying. I don't know if Kam is gonna appear on any of the hooks of this on this mixtape. I'm sure he is, and he's also a vibe. But so far, I think maximum I've heard encore on the hook, and I am just loving it. चलो first place पे हैं ही दोनों भाई दोनों is that okay? हाँ first place पे हैं okay very nice. Now what is I'm getting to Raval's track next yay and बात ऐसी घर जैसी so that will be in the next video. Maybe I'll do it today only in the session or maybe I'll do it after my travels. We don't know.
Okay, see you then. Take care of yourselves. I'm there on Instagram and Twitter. I keep forgetting to do this. And take care of you. Live long and prosper. Oh, let me know what you thought of this track because I want to know your thoughts on what I said. Live long and prosper. जान मेरी जान दिली जान देखी छाछ तोड़े दिल तोड़े गांड मुझे जान मेरी जान सुना जान मेरी जान दिली जान देखी छाछ तोड़े दिल तोड़े गांड मुझे जान मेरी